So this is what jurisprudence is all about. Now बहुत सारे jurists ने jurisprudence की अलग अलग definitions दी थी. So we will start with the Roman jurist, जो कि he is the one of the oldest. He started in 228 AD. His name is Ulpian. So what he said, आप please look at the PPT. He said the observation of things human and divine, the knowledge of the just and unjust is called jurisprudence. So जब आप एक ह्यूमन होता है, एक गॉड होता है, और इन सब चीजों की जो जो नॉलेज होती है कि क्या चीज सही है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट, दैट इज व्हाट इज jurisprudence. This is what Ulpian said. So Jeremy Bentham, as we all know, great jurist. He is from 1748 to 1832. What he said, that he said that any analysis of formal structure of law and its concepts is jurisprudence. तो जो लॉ का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, जो एक सोसाइटी में स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि इंडिया का आप देखेंगे, जुडिशरी से लॉ निकलती है, लेजिस्लेचर से लॉ निकलती है. तो ये जो स्ट्रक्चर है हर कंट्री का, दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ और जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो jurisprudence है. So John Austin, we all know कि he is known for his positive law theory. थ्योरीज पे हम आगे आएंगे when we will read the schools. So तो जो भी पॉजिटिव लॉ की फिलोसफी है, that is jurisprudence. इसी तरीके से थॉमस अर्स्किन हॉलैंड, he is a English jurist, and he said the formal science of positive law. So even even his definition is what is built with just John Austin. And he criticized the division of subjects into general and particular. उनके हिसाब से सब कुछ एक है, कुछ जनरल और पर्टिकुलर करने की जरूरत नहीं है. और Hans Kelsen है, he was an Australian jurist. So according to him, the study of systematic arrangement of general principles of law. So it is also quite similar to the Jeremy Bentham theory, Kelsen's theory. And very important, Sir John William Salmond, he was a jurist, he was a judge in New Zealand. So according to him, jurisprudence is the science of first principles of civil law. So जैसे कि civil law start हुई, civil law start होने का पीछे का purpose क्या था, what was the science behind it, civil law के start होने की, that is jurisprudence. And Charles Allen, he is an American jurist, he was from Harvard University. According to him, scientific synthesis of the essential principles of law is jurisprudence. So if you see in these definitions, the word science and scientific has been used by many jurists, like by Charles Allen or by Salmon or by Holland. तो इन सब ने वर्ड साइंस को लेकर जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर है ऑफ सिविल लॉ का, या फिर जो उसके पीछे का सिंथेसिस है, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस. अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पे.